reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044. Hello everyone and welcome to Metro Plus Desi Tadka. भाई आज हम ना ही सिर्फ Facebook पर हैं, we are also on YouTube. This is the first time we've done this and अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि YouTube पर भी देखें. वही चैनल है Metro Plus 1044. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. जब ये ख़त्म हो जाए प्रोग्राम तो प्लीज़ एंड में जाके कमेंट करें और अपने सजेशंस दें कि हम क्या कुछ कर सकते हैं और कैसा हमारा आपको शो लगता है. सो आज हमारे पास एक और फिर से हमारे पास एक गेस्ट आए हैं. ये वही हैं जो मैंने 2 हफ्ते पहले जिनके साथ इंटरव्यू किया था, तो आज हम उनके साथ पार्ट 2 करेंगे. और लास्ट टाइम आई थिंक हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे, तो फिर वो वहाँ से हम पिकअप करेंगे. और बट उससे पहले हम करेंगे आज की जो अनाउंसमेंट है होम अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से. ये है अनाउंसमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से. हांगकांग गवर्नमेंट फ्री कोविड-19 वैक्सीन्स दे रही है उन सबको जो 12 साल की उम्र के ऊपर हैं. तो प्लीज़ ये मौका ना गंवाएं और जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करें. आप अपनी रिजर्वेशंस ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं. हांगकांग में जो कम्युनिटी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसके थ्रू, पब्लिक क्लिनिक्स हो गए या फिर प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाकर अपॉइंटमेंट लेकर आप अपने आप को वैक्सीनेट कर सकते हैं. सुनने में आया है कि जो कम्युनिटी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो सितंबर 2021 के एंड में बंद हो जाएंगे. और जो बायोटेक वैक्सीन्स लगाना चाहते हैं प्लीज़ अपनी अपॉइंटमेंट लें ताकि आपको अपना पहला डोज अगस्त के एंड तक मिले और दूसरा डोज सितंबर के एंड तक. जहां तक सीनो वैक्सीन्स का सवाल है वो डेजिग्नेटेड प्राइवेट और पब्लिक क्लिनिक्स में अवेलेबल रहेंगे. फिलहाल दोनों वैक्सीन्स हैं जो बायोटेक और सिनोवैक, उनकी एज लिमिट 12 से 18 वर्ष की है. हांगकांग गवर्नमेंट अभी भी सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन सोर्स कर रही है दूसरे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स और ड्रग कंपनी से. जहां तक साइड इफ़ेक्ट्स का सवाल है बहुत ही माइल्ड और टेम्पररी हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें. वैक्सीन्स हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है डिजीज़ से लड़ने के लिए, तो फिर भी अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें और मास्क हमेशा पहने रखें ताकि ये डिजीज़ कम्युनिटी में ना फैले. और जानकारी के लिए प्लीज़ विजिट www.covidvaccine.gov.hk जो कि है www.covidvaccine.gov.hk. और साथ में मैं हेल्थ एंड ट्रैवल एडवाइस फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 का भी बता देता हूँ. तो जैसे कि मैंने कहा कि वैक्सीन्स के अलावा आप प्लीज़ अपनी पर्सनल और एनवायरमेंटल हाइजीन मेंटेन रखें. जैसे कि हाथों की सफाई हो गई, अपने हाथ लिक्विड सोप और पानी से धोएं. हाथों को 20 सेकंड साबुन के साथ रब करें और पानी के साथ धोएं. अगर हाथ धोने की फैसिलिटी ना हो तो 70-80% का अल्कोहल बेस्ड हैंड रब मिलता है, उससे आप अपने हाथ साफ कर सकते हैं. जब खांसी या छींक आए तो प्लीज़ अपने टिश्यू पेपर या हैंकरचिफ को लेकर अपने मुंह को कवर करें. कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स ना करें. अगर बड़े ग्रुप्स में जैसे खाना खाना हो उसको प्लीज़ कम से कम रखें और अपनी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें. जहां ज़्यादा लोग हों प्लीज़ अवॉइड करें. अपना सर्जिकल मास्क हमेशा पहने रखें जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने के वक्त. अपने ड्रेनेज पाइप्स हफ्ते में एक बार आधा लीटर पानी डालें ताकि उससे जर्म्स दबे रहें. और टॉयलेट जाने के बाद हमेशा टॉयलेट का लिड बंद करें और फ्लश करें. अगर आपको किसी भी प्रकार के सिम्टम्स हों तो प्लीज़ मास्क हमेशा डालें. काम और स्कूल मत जाएं और जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को संपर्क करें. और सबसे रिक्वेस्ट है कि बिना वजह हांगकांग के बाहर ट्रैवल ना करें. एंट्री रिस्ट्रिक्शंस और क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स पर ध्यान रखें, ना कि सिर्फ उस कंट्री की जहां आप जा रहे हो, इवन वापसी में भी. और जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हो www.coronavirus.gov.hk. That's www.coronavirus.gov.hk. मैं अभी आपको I'm gonna play a song which is from गुरदास मान. काफ़ी रिक्वेस्ट आई है उनकी, गुरदास मान की. So the song name is छल्ला. So enjoy this and I will be back soon. नी मेरे नाल किया चला
जान कदमा विच थर के मेरी ओए पूरे वे वतन माहिदा दूरे वे जाना पहले पूरे वे गल सुन छलिया छोरा वे कादा लाया छोरा छलकूते करिए वे गल्ला मूते करिए वे सच्चे रब तो करिए वे गल सुन छलिया भोला वे रब तो कादई भोला छलकालियां मरचा वे मौरा पी के मरसा वे सिरे तेरे जड़सा वे गल सुन छलिया भोला वे तार के कीताई भोला नोनो खेवे वे पुत्र मिठड़े मेवे वे अल्लाह सबनू देवे वे गल सुन छलिया छावा वे मामा ठंडियां छावा Okay, welcome back guys. उम्मीद करता हूँ कि आपको गुरदास मान साहब का गाना पसंद आया हो और now it's time to welcome our guest, Mr. Skhawat Ali. How are you, bro? Good. Thank you for having me on your show again. Hey, pleasure's all mine. Very fun, doing really great. As you can see, I am in... You're in a Hong Kong Olympics jersey. Nice. Yes, I was walking out over here and I was like, okay, people look at me and they were like, oh, are you back from Korea, Japan? I was like, yeah. So yeah, I am in full support for our athletes in Olympics and they are doing an excellent job. That's good. I'm really proud of them. Yeah, so are we. Any particular sport that you're supporting, like swimming, tennis, or just in general Hong Kong? Just general. I tried to, watched, what was the last? Watched fencing today. Okay. Mixed. Hong Kong lost to Russian Olympic Committee. Right. Which was close one. They fought really hard. Okay. But yeah, overall, I think Hong Kong athletes are doing really great and making us proud. Yes. With their performances, especially the one gold medalist and the silver medalist. So, yes. I'm really proud that that I had a chance to wear the Hong Kong jersey once in my life, and looking and watching them on TV, it just makes us really feel good. Yeah, and you also represented Hong Kong as well on a national level, international level. Yes. आपने एशिया कप में डेब्यू किया था 2008. That was ODI debut, yes. Yes, ODI. Yeah, like you were along with all the subcontinental teams like India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, etc. जी. और आप एक ग्रुप में थे जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों थे. हाँ जी. तो थोड़ा सा बताएं कि लाइक हाउ वाज द फीलिंग, क्या सीखा आपने?
हाँ, लास्ट टाइम आपको बताया था कि हाँ। थोड़ी बहुत we discuss about it. हम पाकिस्तान इंडिया ग्रुप में थे और obviously हमारे दोनों के साथ कुछ न कुछ बैकग्राउंड कनेक्शंस हैं हमारे. हाँ जी, हाँ जी. So it was a really exciting moment and a proud moment for us. We were really excited to play them. Obviously, coming from Hong Kong, from a small city, Right. we knew that we were a very inexperienced team, but we were going with full heart out. Tried our best to compete. So yeah, the feelings were great. We felt proud, and obviously we played against some of the big names in cricket, such as Dhoni, Right. Shahid Afridi, Mohammad Yusuf, Right. Raina from India. So it was great experience. Okay. Imagine you playing somebody who has scored, Yeah. the most number of runs in international cricket. Yeah. So बहुत अच्छा लगा इतना. I mean, ऐसा एक्सपीरियंस आपको दोबारा लाइफ में हाँ, कम ही चांस होते हैं अगर हाँ, आप नहीं. एक छोटी सिटी हांगकांग से हो. वो तो है. तो क्योंकि हमें दोबारा फिर क्वालिफाई करना पड़ता है for हाँ, Asia नहीं. Cup. We did qualify actually, but somehow Yeah. it didn't get into the Asia Cup because after playing 2008, I mean Asia Cup, we had to qualify again in Asian. I think it was not India Pakistan, but we played against all there, Afghanistan, UAE, Right. and we won that competition, which was a qualifier for Asia Cup. लेकिन उसके बाद हमें chance नहीं मिला. Right. There were some issues with the ACC, so but like in Asia Cup, man, I think that experience was something that I will remember forever and cherish forever. Right. वो T20 में भी एक बार was it T20 वर्ल्ड कप में जहाँ पे हांगकांग ने क्वालिफाई किया था. क्वालिफाई किया था. हाँ, उसका उस टीम का हिस्सा तो नहीं था मैं, लेकिन I think that they beat Bangladesh in that yes. World Cup. Yes, हाँ. one of the games, and I remember, the whole Hong Kong team were. Yes, we were all excited. Yes, like, we were really Bangladesh. हाँ, Bangladesh को beat करना for हाँ, Hong Kong, it was a big, massive thing. Yeah, it was a massive very thing, big thing. I think we Hong Kong has done great in the past. They had the ODS status for a number of years. So they were playing the nations who had ODS status. So every game they were playing, it was the ODI game. But currently, I mean, since they जब तक उनके पास ओडीआई स्टेटस था, उसके बाद ओडीआई स्टेटस चला गया तो थोड़ी सी क्रिकेट जो है ना नीचे की तरफ जाना शुरू होगी. थोड़ी सी तो हाँ, आई थिंक तब चांस था हांगकांग टीम के पास कि वो एक टाइम था कि हांगकांग टीम 12वें नंबर थी T20 में. तो इतनी ऊपर रैंकिंग में जाकर आप नीचे आना for a country like or city like Hong Kong, it takes again years to go back up to where you were. So now फिर शुरुआत वही वर्ल्ड क्रिकेट लीग से ही हो जाती है ना, उनकी then भी you काफी have to go. डिवीजन्स हैं. Then you have to play division 3, 2, and then 1, and then you have to be top either 2 or 4 in that division. And then you get the status. So, which is again a long process. Yeah. You have to go through again. So, जिसमें बहुत साल लग जाते हैं. So let's hope Hong Kong gets back to where it was a few years ago. Only if they can play cricket, because I know they have not been traveling. They're not able to travel and play in the competition. So. जब तक सब कुछ खुलता नहीं है और जब तक ये competition start नहीं होते तब तक तो because I met one of the Hong Kong players and they said there's no other competition this year. Yeah. They're only hoping to have something next year. So मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था कि क्रिकेट लाइक लोकल कम्युनिटी में और हमारी जैसे एथनिक कम्युनिटी में कैसे प्रमोट किया जाए. अभी जैसे आपने बोला है कि कि ओडीआई स्टेटस तो काफ़ी टाइम से चले गया एंड अभी हांगकांग काफ़ी नीचे आ गया. तो जस्ट टू गेन बैक द ओडीआई स्टेटस दे हैव टू वर्क फॉर नंबर ऑफ इयर्स. काफ़ी टाइम लगेगा. at least couple of years to win all the divisions they have to और साथ में अभी तो ट्रैवल भी नहीं हो रहा है. हाँ, अभी तो ट्रैवल 2-3 साल तो आई थिंक वो और निकलेंगे ऐसे. हाँ. तो लोकली आपको क्या लगता है कि अब जब तक ट्रैवल खुलेगा और प्लेयर्स बाहर जाके अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तब तक तो काफ़ी प्लेयर्स रिटायर के टाइम में भी आ जाएंगे. कुछ हो सकता है राइट. तो जूनियर सेटअप हुआ या स्कूल सेटअप वगैरह वगैरह
आपको कैसा लगता है कि लाइक कैसे प्रमोट किया जाए अभी हांगकांग? I think Hong Kong का setup, cricket setup it's quite good. जब मैं स्कूल में था तो हमारी school league हुआ करती थी, which was quite competitive. So I think it is still the same. So we used to play, different schools at under 15, under 19 level. So there was a lot of competition, I would say, at that time. And I believe it still is. So वहाँ पे बेस अच्छा है हमारा स्कूल में. जितनी प्रमोशन हो सकती है क्रिकेट में और टीमें जितनी ला सकती हैं पॉसिबली लानी चाहिए. और क्योंकि वहीं यंग प्लेयर्स जाके आपको हांगकांग के वहाँ से मिलेंगे आपको प्लेयर्स हांगकांग के लिए खेलने के लिए. इमेजिन करेंगे अगर आपके पास 6 स्कूल की अच्छी टीम्स हैं तो उनमें से अगर 11 under 19 अच्छे प्लेयर्स मिल जाते हैं, which could be prospect for the national team in coming years. So जितनी भी क्रिकेट प्रमोट की जाए स्कूल्स में उतनी कम होगी. And especially then you go down to primary school also. That's where your interest builds. In secondary you're almost like you're into sport. Primary, that's where your interest builds. So you should also continue promoting in primary schools, not just in schools where there are non-Chinese students, also in Chinese schools or local schools, just promote all the programs they have or make programs for Chinese schools, so that the interest in local community also builds up, which will help the sport overall. The more exposure it gets, the more promotion it's going to get, and the more players you're going to get from that level. Going up to high school they play for clubs. From clubs then you're almost ready to play for national teams. So जितनी भी promotion school में, as I said, की जाए उतनी कम होगी. Clubs cricket को भी I think support चाहिए. Some clubs do struggle. Yes. I think a lot of clubs do struggle financially. Yeah. I am saying. Yeah. Because they have to, spend a lot, and I know that. So for players also, then again contribute so that they can run the club. True. It can be a burden on a lot of shoulders. So I know there are people who spend from their own pockets to just run the clubs. But if there can be something done financially to support those clubs, which eventually will benefit the Hong Kong cricket going forward. True. Whether it's Saturday League, Sunday League, or even social. So the thing is, if there's community, even as playing at social level, if there are more people playing, the sport itself is already being promoted. So I think 2-3 चीज़ें I think continue करनी चाहिए. Hong Kong cricket को obviously there are some experienced people up there, so they can just look at these issues, and if they want to get back to where Hong Kong cricket used to be, they have to just they have to go to grassroots. They have to go to that level so that they can. I know that they are doing some under 19 competitions at the moment. So where they have few teams, I think at least 3 teams, and I think this is a good thing. Like you already have like 3 teams, pool of students, not students, sorry, pool of players who can in the future represent Hong Kong team. So you're looking at those talent. So you should always be talent hunting, whether it's at school, clubs. Stay in touch with the coaches who are coaching in different clubs, managers also. So that they keep the players in their eyes. मैंने I think few years ago मैं भी जाता था schools में, I was under CHK थोड़ा सा कर रहा था, जैसे आई थिंक आपने भी किया. हाँ जी. CHK वही जो उनका पार्ट टाइम होता है जो, तो स्कूल्स में मैं भी गया था. आई डिड फॉर प्राइमरी स्कूल्स. लेकिन मैंने देखा है कि हाँ वो सारे जो स्कूल्स में होते थे सभी मिक्स्ड कल्चर के ही आते होते थे, इंडियन, पाकिस्तानी, फिलिपिनोस, और सभी कल्चर के आके 1 घंटा लगा के जाते होते थे. सो वही है कि इन प्राइमरी स्कूल हाँ उन्होंने प्रोग्राम्स वगैरह बना के रखे हुए हैं, बट वो जब सेकेंडरी में जाते हैं ना, क्योंकि स्पोर्ट्स इतने सारे हैं, then they have to choose. और सेकेंडरी में वो प्रोग्राम नहीं है जो प्राइमरी में है.
Okay, ठीक. So यहाँ पे I think इनको like I think they have to do something for the secondary as well. Secondary, yeah. क्योंकि secondary something कि like एक तो बच्चा teenage हो जाता है तो उसकी हाँ, अलग life the होती है. interest they change हाँ, there, the interest yeah, change. hormones change there, yeah. The primary में like you have no choice, no option. You have Yes. to go into all these activities. But in Yeah. secondary वो choices ज़्यादा आ जाती हैं. और तो फिर यहाँ पे I think there's a little bit of lagging क्योंकि इतने सारे sports हैं. तो obviously तुम जैसे अभी if cricket is competing with like soccer, rugby, basketball, yeah, all then, these major sports, then वो पीछे ही रहेगा फिर like I mean it's gonna be मेरे हिसाब से it's gonna be hard कि like कि प्राइमरी में तो हाँ टैलेंट है मिल जाएगा क्योंकि वो ग्रास रूट है. उसके बाद जब सेकेंडरी आता है और जब क्रिकेट को compete करना है इतने सारे स्पोर्ट्स में तब क्या. I mean I know there's school league है लेकिन उससे अलावा क्या कर रहे हैं like उसके अलावा भी I think कुछ ना कुछ उनके लिए इंसेंटिव होने चाहिए ताकि मोर वही जो प्लेयर प्राइमरी से खेल कर प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हैं और जो क्रिकेट खेलते हैं और देन इन सेकेंडरी व्हाट हैपेंस दे आल्सो हैव अदर स्पोर्ट्स एज यू सेड तो उनमें से वो देन चूज करते हैं हाँ नहीं ठीक है मैं क्रिकेट नहीं मैं इस साल लेट्स से बास्केटबॉल खेलता हूँ तो फिर वो बास्केटबॉल की तरफ चले जाते हैं अगर अच्छे हुए उसमें तो वो उसी में रह जाते हैं फिर वो क्रिकेट में वापस नहीं आएंगे फिर एग्जाम्स आ जाते हैं तो देन दे हैव स्टडी प्रेशर और हांगकांग जैसी सिटी में आप सिर्फ एक ही स्पोर्ट कर सकते हो. हाँ टाइम लिमिट होता है टाइम हाँ कमिटमेंट काफ़ी टाइम देना पड़ता है उस स्पोर्ट को और अगर टाइम नहीं है और एक से ज़्यादा स्पोर्ट है तो आपकी फैमिली नहीं आपको करने देगी ओके कि आप एकेडमिक्स पे जो है ना जोर दो. चलो अभी हम आते हैं अनाउंसमेंट पे. दिस अनाउंसमेंट जो है वो है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से. 2003 से हांगकांग में जो गैस अप्लायंसेस इंपोर्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सर्विसेज डिपार्टमेंट से अप्रूव होकर आते हैं और उन पर जीयू की एक मोहर लगी होती है. जो पुराने अप्लायंसेस हैं जिन पर जीयू की मार्किंग नहीं लगी उनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है और उनको रिप्लेस कर लेना चाहिए. जिस पर जीयू की मार्किंग हो जो ये अप्लायंसेस यूज़ करते हैं उनको हर 18 महीनों में रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शंस करवा लेनी चाहिए. और ज़्यादा जानकारी के लिए आप EMSD की वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है www.emsd.gov.hk. तो अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और एक गाना चलाएंगे मैं शायर तो नहीं और उसके बाद हम आएंगे शिखावत अली से बातचीत करने.